हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सर। सलाम। कल हमारा वो बड़ा कंट्रैक्शन प्रिंसिपल के लिए जो चीज़ें हमने देखी थी वो हो गया था कल ही बेसिकली। आज जो हमारा टॉपिक होगा इट विल बी subspaces of a complete space and completion of a metric space। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ start with a theorem। आप एक theorem पहले रिकॉर्ड करिए। Let Xt be a complete space and Y not equal to phi be a subset of X. So Y is a non-empty subset of X. Then the subspace Y with D sub Y। देखिए यहाँ जो Y है आपका it's non-empty, so that means you can restrict this D to Y cross Y and thereby you'll get D sub Y, and D sub Y will be a metric on Y, so that means you'll have another metric space, और इस metric space को हम कहते हैं subspace of this Xt associated with this non-empty set Y. This of Xt is complete if and only if and only if this Y is closed in Xt। तो कहने का मतलब ये है कि subspace of a complete space is complete if and only if, बस एक ही सूरत में ये complete हो सकती है, when Y, that means the underlying set in the subspace, is a closed set in the paired space। एक मिनट, हेलो, अब ना सुनो किस घर की हैं तचु कम लॉग तो अगर तह सुनो वो मुझसे भाई बा कैसे पर वहाँ क्यों तो दोपहर बाद है कोई था। चलो शुक्रिया। सबसे पहले हम इसी को प्रूव करेंगे बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू दिस जो हमारे टॉपिक में ये है ना, आज के लेक्चर का जो टाइटल है उसमें ये जो आप कंप्लीशन देख रहे हैं ना इसके रिलेटेड है ये। पहले हम इसी को देख लेते हैं ये रिजल्ट, ये और ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बिकॉज आपको मतलब इट एक्चुअली गिव्स अ कंप्लीट कैरेक्टराइजेशन ऑफ कंप्लीट सबस्पेसेस ऑफ अ कंप्लीट स्पेस। आपको पूरा बताता है कि कौन सी सबस्पेसेस कंप्लीट होंगी आपकी कंप्लीट स्पेस में। अगर पेरेंट स्पेस कंप्लीट है तो इस कंप्लीट पेरेंट स्पेस की कौन सी सब स्पेसेस कंप्लीट होंगी ये आपको यहाँ से पता चलता है। So we'll first prove this. Proof. पहले हम assume करेंगे this y with d sub y is a complete space, और मैं आपको दिखाऊंगा that
this y must then be a closed subset of xt. Assume this is a complete space. Full stop. By the way, आपको याद है what is this d sub y? D sub y is the restriction of d to y cross y. D is a function, D is metric on x, so it's a function whose domain is x cross x, right? And it takes values in 0, infinity. Now y is a subset of x, so y cross y is a subset of x cross x. आपने क्या करना है? आपने इस d को restrict करना है to this subset, and it will be non-empty. Why? Because y is non-empty. So this y cross y will be non-empty. In this way, you'll get d sub y. और हमने ये चीज पहले ही offline classes के दौरान ही देखी थी. This defines a metric on y. So y with this d sub y is a metric space. और चूंकि इसके बाहर भी एक space है, rather चूंकि एक already एक और space के अंदर है ये y with d sub y, so we say it's a subspace of that space. That means subspace of xt. सबसे पहले आप यहाँ क्या assume करें? Let's assume that y with d sub y is a complete space. Let z in y closure be arbitrary. और मैं यहाँ आपको ये बताऊंगा where y bar is the closure of y in xt. बेसिकली यहाँ सिचुएशन ऐसी है, सपोज दिस इज योर x और इसके अंदर आपका y है, फिर सपोज दिस इज y, ठीक. अब इस y का जो क्लोजर होगा इन xt, दैट मीन्स जो सेट आपको मिलेगा बाय अटैचिंग दीज बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ y टू y, जब आप ये बाउंड्री y के बाउंड्री पॉइंट्स अटैच करेंगे ना y में, जो सेट वहां से आपको मिलेगा, दैट विल इज एक्चुअली दिस y bar, which is actually the usual closure of a set in a metric space. Y is a subset of xd. xd is a metric space. We can take closure of y. और वही है हमारा ये y bar. और इसी के अंदर मैं एक z ले रहा हूँ, and this z is chosen arbitrarily. अब हमें ये भी पता है कि closure points are what? They are limits of convergent sequences. So if z is a closure point of y, so z must be a limit, rather the limit of a convergent sequence in y. तो मैं वही अब लिखने जा रहा हूँ. Then we can find a sequence y sub n running from 1 to infinity in y such that the sequence converges to this z. और ये convergence कहाँ होगी? This y sub n, they go to z as n goes to infinity, और ये convergence कहाँ होगी? It will be in xd, जहाँ आप closure ले रहे हैं y का, in the space xd. That is limit n goes to infinity d of yn comma z. This will be 0 because yns are going to z, so in the limit the distance between yn and z, it will be 0. D distance, because they are converging to z in xd, or xd में distance है d. Now since we know that every convergent sequence is a Cauchy sequence, since every
convergent sequence is a Cauchy sequence. It follows the sequence yn and from 1 to infinity. चूंकि ये भी कन्वर्ज कर रही है ना to z, so it follows it must be Cauchy. Is Cauchy कहाँ पर? जहाँ ये कन्वर्ज कर रही है in xt full stop. यहाँ कंटिन्यूएशन में लिखे अब ये फुल स्टॉप काट दिया और फिर ऐसे लिखे and consequently yn and running from 1 to infinity is a Cauchy sequence and y with d sub y. इसका रीजन आप मुझे बता सकते हैं? What is the reason of this? This is a Cauchy sequence in xt और मैं आपसे कह रहा हूँ this must also be a Cauchy sequence in the subspace. This is the reason. इसका एक प्लेन रीजन है, वो ये है बिकॉज जो d हाँ एक तो y is contained in x, वो तो है ही, और दूसरा जो ना मेन इम्पोर्टेंट जिसका हाँ असल में ज्यादा काम है वो असल में ये है जो d sub y है, it is basically the restriction of d to y cross y. So d sub y distances are actually d distances. Distances वही है, बस आप डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं यहाँ पर d के डोमेन को. तो अगर वो क्लोज है in d these y's, Cauchy means actually eventually the terms of this sequence will be close. और अगर वो क्लोज होंगी in d और चूंकि d sub y भी असल में d sub y distance is also a d distance, so they must be close in this d sub y distance also. So that means if it is Cauchy in xt, it must be Cauchy in y sub dy. ये एक important observation है by the way, और ये याद रखिएगा अगर you have a metric space and a subset in that metric space, and if you have a sequence in this subset y1 y2 so on, if this sequence forms a Cauchy sequence in the parent space, then it must be a Cauchy sequence in the subspace also. आप प्रॉपरली ना प्रूव भी कर सकते हैं, इसमें ऐसे कुछ करना ही नहीं है, इसमें बस ये ऑब्जर्वेशन यूज करनी है d sub y is restriction of d. फुल स्टॉप. thus अब यहाँ हम किसे यूज करेंगे? वी नो दैट हमारी जो assumption है वो ये है कि दैट y with d sub y is a complete space. So if it is complete, नीचे ये आपकी Cauchy sequence है, so it must be convergent. Convergent means we must be able to find its limit in y. मैं वही लिखने जा रहा हूँ. Thus we can find a y in कहाँ? In capital Y such that these y sub n's they converge to y as n goes to infinity in the metric space y with d sub y. ठीक है ना? It's Cauchy in this space is complete, so it must be convergent, so therefore you must be able to find a y. Full stop. That is limit n goes to infinity
d sub y evaluated at y comma yn, and the limit must be 0. Now अब ये देखिए d of अरे ये 0 is less than or equal to d of y comma z, है ना, because d of y comma z is distance and distance cannot be negative, and this is less than or equal d of yn, ऐसे लिखिए d of y comma yn plus d of yn comma z. क्यों? बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी। बेसिकली मैं ये yn यहाँ इंसर्ट कर रहा हूँ, और आप बेसिकली कोई भी yn इंसर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल n's इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहाँ मैं फिलहाल ट्रायंगल इनइक्वालिटी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ मैं आपसे रीजन पूछूंगा, दिस इज इक्वल d sub y एट y comma yn प्लस, इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा d of yn comma z। बताइए क्यों, कैसे आता है? तो बेसिकली अगर आप देखेंगे मैं इसको इससे रिप्लेस कर रहा हूँ। इसका रीजन क्या है? बिकॉज बेसिकली दिस एंड दिस दे आर इक्वल। अब मुझे बताइए क्यों, क्या है इसका रीजन? बिकॉज d sub y is a restricted of d. is a restriction of d to y cross y। इसकी रिस्ट्रिक्शन है ना, तो d sub y, बिकॉज ये जो है ना यहाँ पर y और yn's, these are y पॉइंट्स, है ना। लिटिल y भी कैपिटल y से आ रहा है, कैपिटल Y से आ रहा है, और yn's भी कैपिटल Y से आ रहा है। सो देयरफॉर दे आर कैपिटल yn पॉइंट्स, और y पॉइंट्स के लिए, कैपिटल Y पॉइंट्स के लिए d और d sub y सेम है। सो दिस एंड दिस आर सेम। नाउ व्हाट हैपेंस टू दिस डिस्टेंस एज n goes to infinity? We know that this goes to 0. Same is the case with this distance, ये भी 0 हो जाती है, वो भी हमने ऊपर नोट करके रखा है। This goes to 0, this goes to 0, so their sum will go to 0 as n goes to infinity। ठीक, अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप इसे देखेंगे, व्हाट इज दिस? इट इज फ्री ऑफ n, सो देयरफॉर इट्स अ कांस्टेंट। आप लिमिट ले रहे हैं और n, एज फार एज n इज कंसर्न, दिस इज कांस्टेंट। ठीक, अब क्वेश्चन है मेरा, क्या ये पॉजिटिव हो सकता है ये कांस्टेंट? नॉन नेगेटिव तो है ये, मैं कह रहा हूँ क्या ये पॉजिटिव हो सकता है? मतलब क्या इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, दिस इज 0, दिस इज d ऑफ y comma z, क्या ऐसा पॉसिबल है? मैं कह रहा हूँ ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? बिकॉज दिस क्वांटिटी d of y comma z, इट इज लेस देन और इक्वल टू समथिंग व्हिच इज गोइंग टू 0, है ना। इट इज लेस देन और इक्वल टू दिस, एंड दिस क्वांटिटी इज गोइंग टू 0, सो देयरफॉर ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देन फिर क्या होगा? तो फिर आप कह रहे होंगे कि दीज क्वांटिटीज कैन नॉट क्रॉस दिस बैरियर। अगर आप कह रहे हैं कि दिस इज पॉजिटिव, तो ये 0 को फिर नहीं जा सकती है ये क्वांटिटीज, चूंकि ये 0 को जा रही है, सो देयरफॉर दिस मस्ट बी 0। इनफैक्ट अगर आप स्क्वीज प्रिंसिपल यहाँ यूज करेंगे, वहां से भी आप ये हासिल कर सकते हैं। दिस गिव्स d of z comma y must be 0, और अगर डिस्टेंस 0 है तो फिर ये पॉइंट्स क्या होने चाहिए? ये सेम होने चाहिए, and therefore this z it must be equal to y। यहाँ भी एक ना एक इम्पोर्टेंट चीज है जो आप यहाँ से सीख सकते हैं, वो ये है कि अगर आप इस z और y को देखेंगे ना ऊपर प्रूफ में, व्हाट इज z?
Z is the limit of yns in the YG. parent space, whereas little y is the limit of yns in the subspace. और नीचे आप देख रहे हैं they are same. That means subspace limit, parent space limit ये असल में सेम होती है, ये डिफरेंट नहीं हो सकती. अगर कोई सीक्वेंस पेरेंट स्पेस में कन्वर्जेंट है, ठीक, और अगर वो सीक्वेंस सब स्पेस में भी आती है और अगर उसकी लिमिट भी वही आती है, तो वहां भी वो उसी लिमिट को कन्वर्ज करेगी. मतलब सब स्पेस में कोई डिफरेंट लिमिट अगर होगी कन्वर्ज सब स्पेस में, तो वही लिमिट होगी जो पेरेंट स्पेस में थी. यहाँ मसल में वही देख रहे हैं. बाय द वे, अब ये y कहाँ से आ रहा है, लिटिल y कहाँ से आ रहा है? लिटिल y comes from y, है ना? z is equal to little y, so that means z also comes from capital Y. लेकिन z कहाँ से हमने लिया था? Y closure से. और arbitrarily लिया था, so that means y closure is a subset of y. Since z in y closure was chosen arbitrarily, it follows y closure is a subset of y, and y is already a subset of y closure because y closure is y union d of y, and therefore y must be equal to its closure, और अगर closure के बराबर है, so y must be closed. Hence y is closed in xt. तो एक पार्ट इसका हो गया, because y closure is closure in xt and y is equal to y closure means y is closure in xt. तो ये हो गया पहला पार्ट. अब दूसरा पार्ट, कन्वर्स पार्ट. कन्वर्स पार्ट में हम अस्यूम करेंगे दैट y is closed, और मैं आपको दिखाऊंगा दैट y dy must be complete. Conversely, assume capital Y is closed in xt we shall show that y with d sub y is a complete space. To this end, मतलब ये करने के लिए let un ranging from 1 to infinity be a Cauchy sequence in y with d sub y. So it's a Cauchy sequence in subspace. So therefore it must be a Cauchy sequence in parent space also. Because जो subspace distances और parent space distances, मतलब इनका वैल्यू असल में सेम है. सबस्पेस में जो डिस्टेंस है वही पेरेंट स्पेस में भी होगी. सो अगर ये Cauchy है इन सबस्पेस, it must be Cauchy in the parent space also. Then this un ranging from 1 to infinity must be a Cauchy sequence in the parent space, that means xt as well. और हमारी assumption के हिसाब से
xd is a complete space, है ना? हमारी assumption है वहाँ आप मान रहे हैं कि that xd is a complete space. एक global assumption है इस theorem के लिए, मतलब ये necessary part में भी रहेगी और sufficient part में भी रहेगी assumption. So it's a complete space xd. This is Cauchy in xd, so that means what? First up, since xd is a complete space, it follows what? It follows we can find a u in x such that un's converge to u as n goes to infinity. कहाँ पर? In space xt, जिसकी completeness की आप बात कर रहे हैं. This is complete. This is a Cauchy sequence in xd, so therefore it must be convergent in xd, so therefore you must be able to find a u in x such that un's converge to u as n goes to infinity in xd. That is limit n goes to infinity d of, क्योंकि कन्वर्जेंस xd में है और xd की मेट्रिक d है, so d of un comma u in the limit it must be 0. Consequently, this u it must be in, ये मैं आपसे पूछूंगा क्यों, y closure, बताइए क्यों? Because it is a limit point. नहीं, limit नहीं, it's the limit of a convergent sequence. Yes sir, sorry for limit. Yes sir, ठीक है. un जो है it's a sequence in y, right? और u इसकी लिमिट है इस सीक्वेंस की, so u becomes the limit of a convergent sequence in y, so therefore it must be a closure point of y. But what is y? Closed. y is closed. So अगर ये closed है तो y closure किसके बराबर होगा? Sir, y की. y के ही बराबर होगा. So that means u belongs to y. And एक और चीज, अगर आप इसे देखेंगे, आप लिमिट n goes to infinity d sub y at u comma un, पहले मुझे बताइए does this make sense? It makes sense. क्यों? Because d sub y जो है ना, इसका डोमेन है y क्रॉस y. अब अगर आप इसे देखेंगे u, हमने एस्टेब्लिश किया है कि that u comes from y, so this belongs to y. UNs are also coming from y, so that means this ordered pair it belongs to y cross y. और अगर ये y cross y में है तो आप इस पर d sub y अप्लाई कर सकते हैं. So this makes sense. और मैं चाहता हूं कि आप इसकी लिमिट देखिए as n goes to infinity. मैं आपसे कह रहा हूं this is same as limit n goes to infinity d of u comma un. बताइए क्यों? वही reason, because d sub y is restriction of d. So this and this they are same. And what is this limit? ये हमने अभी ऊपर देखी, ये मेरे सामने ये. The limit is 0. So this is 0. तो क्या देख रहे हैं आप अगर आप इसको समराइज करेंगे? मैं आपको दिखा रहा हूं फॉर दिस Cauchy सीक्वेंस हमने क्या किया था, हमने एक Cauchy सीक्वेंस ली थी in y dy. मैं आपको दिखा रहा हूं corresponding to this Cauchy sequence we can find a u. कहां पर? In y such that what? Such that the distance between u and d sub y, distance between u and u sub n
it goes to 0 as n goes to infinity. So that means these u sub n's are going closer and closer to u in this metric d sub y. So that means they are converging to u, which is a point of y, in the metric space d sub y. Hence, u sub n's, they are converging to u as n goes to infinity in the metric space y with d sub y. ठीक, so that means जो ये Cauchy sequence ऊपर आपने ली थी ना ऐसी, it was chosen arbitrarily. ठीक, आप देख रहे हैं कि ये convergent है, so that means every Cauchy sequence in y with d sub y is convergent, so that means it's a complete space. Thus, stop. Thus, y with d sub y is a complete space. So y with d sub y is complete means y is closed, and y is closed means y with d sub y is complete. That means the theorem is established. हमें यही करना था, हमें दिखाना था this is complete if and only if y is closed in X. Now let's take an example. In fact, we'll take two examples. We know that अगर आप इसे देखेंगे R with the usual metric, it's a complete space. Stop. अब अगर आप ये करेंगे if y1 be equal close open 0 1 closed at 1 open at 0, then y1 together with the restriction of this modulus, this is not a complete space. है या नहीं? क्योंकि आपने अभी देखा ना ऊपर सबस्पेस की कंप्लीशन के लिए क्या चाहिए होता है? The closedness of the underlying set. यहाँ जो underlying set है आपका it's not closed. The underlying set is not closed. So that is the reason the subspace cannot be complete. It's not a complete space. Whereas अगर आप अब ये देखेंगे, on the other hand, if y2 be equal close at 0 1, अपनी माइक ऑफ करिए अगर आपकी सराउंडिंग्स में शो हो जाता है. If y2 be close at 0 1, then this y2 together with the restriction of the modulus y2 cross y2 is a complete space. ठीक है ना? This is a complete space. क्यों है complete space? Because इसका जो underlying set है y2, it's a closed subset of the parent space. So it must be closed by the above theorem, right? So मैं दोबारा लिख रहा हूँ. इसका पर्पस दोबारा लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा ना यहाँ एक इंटेंशन है वो एक्चुअली
ट्रैक एम है जिसको मैं हासिल करना चाहता हूँ। तो हम क्या देख रहे हैं, y1 with the modulus is not complete. Basically, if y1 is close open 0 1, then y1 with modulus is not a complete space. ऐसे आप इसको अदरवाइज भी देख सकते हैं, बिकॉज अगर आप इस सीक्वेंस को देखेंगे 1 by n as n runs to 1 to infinity, this is a Cauchy sequence. It's a Cauchy sequence in y1 with modulus, but this is not convergent in this because it converges to 0 and 0 is not in y1. It's open at y1. Oh, sorry, it's open at 0. y1 जो है ना, it's open at 0. On the other hand, अगर आप y2 ये लेते हैं, if you take y2 as close at 0 1, this is a complete space. y2 is this, then if y2 is this, then y2 with the modulus is a complete space. तो this is not complete, this is complete. अब अगर आप यहाँ देखेंगे, you can obtain y2 from y1. कैसे? अब y2 को हासिल कर सकते हैं from y1. किस तरह से हासिल कर सकते हैं? If you attach 0 to y1, you get y2. और y2 केस में the space is complete. तो यहाँ से हमें ना एक impression जैसा मिलता है कि that we can complete an otherwise incomplete space by attaching some new points. लग रहा है ना, एटलीस्ट इस केस में तो हो रहा है, you are able to complete an incomplete space by attaching a new point. 0 जैसे आप अटैच करते हैं इस y1 में, you get a complete space. You get y2 और y2 के केस में you have a complete space. एटलीस्ट इस केस में ये हो रहा है, मतलब we are able to complete an otherwise incomplete space by attaching a new point. अब ये या तो ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है या ये कोई फैक्ट हो सकता है, बस यही दो पॉसिबिलिटीज है. मतलब ये जो आप यहाँ कर रहे हैं ना, that you are able to complete this incomplete space by attaching new point, ये कोई कोइंसिडेंस भी हो सकता है, इत्तेफाक से भी ये हो सकता है, या ये कोई फैक्ट हो सकता है. The remarkable thing is it's a fact. मतलब ये आप एब्स्ट्रैक्ट स्पेसेस के साथ भी कर सकते हैं. मतलब आप एक अदरवाइज इनकम्प्लीट स्पेस को, एक अदरवाइज इनकम्प्लीट एब्स्ट्रैक्ट स्पेस को आप कंप्लीट कर सकते हैं by attaching new points. This is what we do in completion of metric spaces. Completion में हम क्या करते हैं, हम एक otherwise incomplete space को complete बनाते हैं. और कैसे बनाते हैं? We attach new points. अब जितना ये आसान कहना है ना, मतलब करने में इसमें उतनी ही डिफिकल्टीज है, क्योंकि जब मैं आपसे कहता हूँ वी विल अटैच न्यू पॉइंट्स, तो एक मसला है यहाँ पर, वो पॉइंट्स लाएंगे कहाँ से आप? यहाँ तो सिचुएशन आसान थी, जो y1 है ना, इसके बाहर एक दुनिया ऑलरेडी है, y1 इज अ पार्ट ऑफ r. तो यहाँ तो आपको पता है कि y1 के बाहर एक ऑलरेडी एक दुनिया है, तो वहां से आप वो पॉइंट्स ला सकते हैं. इनफैक्ट हमने वही किया, 0 हमने r से लाया यहाँ से इस केस में. अब जब अगर आप इस abstract setting में है, suppose you have an abstract space xd which is incomplete और आप इसको complete करना चाहते हैं, वो completion वाले जो इसको complete करेंगे वो points आप कहाँ से लाएंगे? ये भी एक मसला है ना. Yes, sir. आप समझ रहे हैं मेरी बात? हम ये सारी चीजों को आंसर करेंगे. मतलब ये जो प्रॉब्लम आप यहाँ देख लग रही है आपको कि देयर इज अ प्रॉब्लम, इसको भी हम एड्रेस करेंगे. हम पहले वही पॉइंट्स ही क्रिएट करेंगे, ठीक है.
अब इसी के लिए ये इसके यहाँ ये तो हो गया। अब इसके बाद जो काम होगा इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस कंप्लीशन ऑफ अ मैट्रिक स्पेस। हमारा मेन टारगेट ये होगा, हाउ टू कंप्लीट एन अदरवाइज इनकम्प्लीट मैट्रिक स्पेस। सब स्पेसेस ऑफ कंप्लीट स्पेस तो हमने इस चीज को तो हमने कंप्लीटली कैरेक्टराइज किया ना। अब हमें पता है कि विच सब स्पेसेस ऑफ ए कंप्लीट स्पेस आर कंप्लीट। इट्स एक्चुअली प्रिसाइजली those subspaces whose underlying sets are closed। तो ये तो हो गया। अब ये कंप्लीशन पर हम आएंगे, हाउ टू कंप्लीट एन अदरवाइज इनकम्प्लीट स्पेस। अब बिफोर वी प्रोसीड मैं चाहता हूं कि आप 2 एक्सरसाइजेस रिकॉर्ड करें। मैं ये 2 चीजें आपके लिए एक्सरसाइज दे रहा हूँ। पहली चीज ये है, ये कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। दिस इज एक्सरसाइज 1 से आप ट्राई करेंगे। इफ XD be a metric space, then for all x, y, z in X, अगर आप इसे देखेंगे, मॉडुलस d of x, y minus d of y, z, this is always greater or equal d of x, z। एक मिनट मैं शायद सही से नहीं लिखा उसको। नहीं, it's not greater or equal, it's less than or equal, sorry। ये है। This is known as the reverse triangle inequality। ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। आपको क्या करना है, आप d of x, y को लीजिए। इसके लिए थोड़ी सी हिंट आपको दे रहा हूं। अगर आप इसे लेंगे, दिस इज लेस देन और इक्वल टू d of x, z प्लस d of y, z, है ना। ट्रायंगल इनइक्वालिटी। मैं z यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। अब क्या करिए, आप इसको वहां ट्रांसपोज करेंगे आप लेफ्ट साइड में, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा d of x, y माइनस d of y, z is less than or equal to d of x, z। ठीक है। और सिमिलरली इसे आप रखेंगे स्टार, और सिमिलरली अगर आप इसे देखेंगे, जिस तरह से हमने ये यहाँ की लिया था ना, इसे किसे d of x, y को, अगर मैंने ये लिया होता d of y, z, इसको भी मैं यही एसेंशियली यही कर सकता हूँ। बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी दिस इज लेस देन और इक्वल टू d of y, x प्लस d of x, z। अब आप क्या करिए, आप इसे शिफ्ट करिए या ट्रांसपोज करिए टू लेफ्ट साइड, तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा
जब आप इसको वहां ले जाएंगे इट विल बी माइनस टाइम्स, तो इसको मैं फिर ऐसे लिख सकता हूँ, दिस गिव्स माइनस टाइम्स, ये वहां जाके माइनस आएगा और मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ, तो इट विल बी माइनस टाइम्स डी ऑफ y कॉमा x विच इज सेम एज x कॉमा y, और यहाँ ये प्लस है लेकिन माइनस साइन अब बाहर निकाल रहा है, सो इट विल बी माइनस डी ऑफ y कॉमा z, और आप देख रहे हैं कि दिस इज लेस देन आर इक्वल टू डी ऑफ x कॉमा z, लेट्स कॉल इट डबल स्टार। अब अगर आप स्टार और डबल स्टार कंबाइन करेंगे आपको क्या मिलेगा, अगर आप स्टार और डबल स्टार की राइट हैंड साइड्स को देखेंगे वो सेम है, स्टार में भी डी ऑफ एक्स कॉमा जेड है और डबल स्टार में भी वही है, बट अबाउट द लेफ्ट साइड्स, लेफ्ट साइड में आप स्टार में ये क्वांटिटी देख रहे हैं और डबल स्टार में द क्वांटिटी इज द नेगेटिव टाइम्स ऑफ दिस, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि दिस क्वांटिटी एज वेल एज माइनस टाइम्स दिस क्वांटिटी, ये दोनों क्या है, दे आर बोथ लेस देन आर इक्वल डी ऑफ एक्स कॉमा जेड। अब हमें ये भी पता है इफ a इज अ क्वांटिटी देन मॉड a इज ईदर a or minus a. It's a if a is greater or equal to 0 and if it is minus a if a is negative. अब मेरी बात समझ रहे हो, Yes, sir. Yes, जो sir. mod if a is a quantity some real quantity then mod a जो है it's either a or minus a. It's a when a is greater or equal to 0 and minus a when a is negative. तो कहने का मतलब ये है कि मॉडुलस of some quantity is either that quantity or minus time is that quantity. अब यहाँ क्या देख रहे हैं आप, यहाँ देख रहे हैं this quantity and minus time is this quantity, both are less than or equal to this quantity, क्योंकि right side में quantity जो है वो quantities जो है star और double star की वो same है, so that means what, Modulus modulus is of d combining of star x and double comma star, we get modulus of d of x comma y minus d of y comma z is less than or equal to d of x comma z, जो आपको मैंने एक्सरसाइज दी थी। तो ये हो गया बेसिकली, मैंने खुद ही दिखाया, अब इसको आप प्रॉपर्ली लिखेंगे। एंड दिस रिजल्ट इज नोन एज रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इसको याद रखने का तरीका भी आसान है, आप देखिए ये y और y जो है ना, जो कॉमन होता है ना दोनों में वही चीज एब्जॉर्ब होती है। दिस इज डी ऑफ x कॉमा y, दिस इज डी ऑफ y कॉमा z, y कॉमन है दोनों में और यहाँ आप देख रहे हैं y नहीं है, सो दैट मींस इन अ वे y एब्जॉर्ब हुआ है। बस ये है इसको याद रखने का तरीका, डी ऑफ x कॉमा y, डी ऑफ y कॉमा z, जो कॉमन होती है, जो चीज कॉमन होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। और आपको पता है ये किस की जनरलाइजेशन है, इट इज जनरलाइजेशन ऑफ दिस। आपने ये आपको पता होगा, जो आपने ना वो एलिमेंट्री इनइक्वालिटीज जो है रियल लाइन में, उनमें पहली इनइक्वालिटी ये आती है, मॉड ऑफ a प्लस b इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल इनइक्वालिटी। वहां एक और इनइक्वालिटी भी है, वो ये है, मॉड a माइनस b इज ग्रेटर और इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड a माइनस मॉड b। This inequality is called the reverse triangle inequality, और ये जो है it's a generalization of this reverse triangle inequality. That is the reason this is also called reverse triangle inequality. ये अब आप याद रखेंगे, मैट्रिक्स स्पेसेस में ये भी होता है। अब इसके बाद आप एक नोटेशन रिकॉर्ड करिए, let x be a non-empty set, then by this symbol C B X R, then by this symbol CBXR we shall denote the set of all possible
possible bounded of all possible continuous bounded real valued functions defined on x. अब समझ रहे हैं क्या है ये? This is actually, or this will stand for what? We'll use this symbol for the set of all possible continuous bounded real valued. इसमें तीन चीजें हैं, continuous भी होने चाहिए, bounded भी होने चाहिए और real valued. और ये नोटेशन में ये हर एक चीज का ख्याल रखा गया है. C stands for continuous, B stands for bounded, R stands for real valued, and this X, it emphasizes that the domain is X. CBXR अगर आप इसे देखते हैं ना, इसमें आपको ये सिंबल से ही समझ आता है कि अगर ना आपको पूरा पता होगा कि ये C क्या है, B क्या है, ये what is the relevance of these. और मैं आपको ये बता रहा हूँ, this C in this notation it stands for continuous, B stands for bounded, X emphasizes the fact that the domain is X, and R जो आप यहाँ देख रहे हैं, it means that the functions are real valued. ठीक, so whenever I write this CBXR, आपको समझना है कि that I'm addressing what? I'm addressing the collection of all possible. ये भी important है, मतलब हम कोई function छोड़ नहीं रहे, we are taking all possible continuous bounded real valued functions on X. ठीक, इसके नीचे आप एक रिमार्क लिखिए. If X is not phi, then CBXR it makes sense, क्योंकि अगर X नॉन एम्प्टी है तो इस पर आप फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं, और फिर अगर आप वो फंक्शन सिलेक्ट करेंगे विच आर कंटिन्यूअस बाउंडेड एंड रियल वैल्यूड, वहां से जो कलेक्शन आपको मिलेगी, दिस कलेक्शन विल बी नॉन एम्प्टी. आप मुझे बता सकते कैसे? मैं आपसे कह रहा हूं कि दिस कलेक्शन इज नॉन एम्प्टी, मतलब इसमें कुछ ना कुछ होगा. नॉन एम्प्टीनेस का रीजन असल में ये है बिकॉज क्या आप मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हैं ऑफ अ कंटिन्यूअस बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन एक्स? व्हाट अबाउट दिस? अगर आप ये लेंगे f at x, if you define f from x into r by this rule, f at x is 2 for all x's in x. ये कौन सा फंक्शन है? It's a constant function. Constant functions are bounded, constant functions are continuous also, और रियल वैल्यूड तो है ही है बिकॉज आप 2 इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक, इसी तरह से अगर आपने लिया होता f x equal to 3 for all x's in x, ये भी इसमें आता है. इनफैक्ट आप यहाँ कोई भी रियल कांस्टेंट ले सकते हैं. तो इसका रीजन असल में ये है बिकॉज रियल वैल्यूड constant functions defined on x are in, they belong to this CBXR. ठीक है? Yes, sir.
सो इट्स नॉन एम्पटी है ये, इसमें कोई शक नहीं है। अब मैं आपको एक और एक्सरसाइज यहाँ दे रहा हूँ, क्योंकि ये नॉन एम्पटी है तो हमारी अपना लालच बढ़ रही है। हम अब चाहते हैं कि ये मेट्रिक स्पेस भी होनी चाहिए, एंड फॉर्चुनेटली आप इसको मेट्रिक स्पेस की शक्ल दे सकते हैं। यू कैन डिफाइन अ मेट्रिक ऑन CBXR। ये मैं आपके लिए एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ, आपको बस क्या करना है, यू हैव टू वेरीफाई मेट्रिक भी। मैं मेट्रिक की जो फॉर्मूला है ना वो यही से मैं आपको दूंगा, बस आपको फिर वो मेट्रिक प्रॉपर्टीज वेरीफाई करनी है। ये है आपके लिए एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज, लेट X be a non-empty set and CBXR be the collection of all possible continuous bounded and real valued functions defined on X stop if sigma from CBXR cross CBXR। आपको पता है कि मेट्रिक जो है ना, इट्स अ metric on a set X is a function from X cross X to 0 infinity। अब यहाँ जो underlying set होने जा रहा है, it's going to be CBXR। So metric has to be a function on CBXR cross CBXR into 0 infinity, open at close it at 0, open at infinity। If sigma from this to this be defined by this rule, sigma when evaluated at f comma g, where f and g are what, ये कहाँ से आने चाहिए, CBXR, right? Because आप यहाँ कह रहे हैं ना, domain is CBXR cross CBXR, so f comma g must come from CBXR। That means the ordered pair f comma g must be coming from CBXR cross CBXR। Now if it is defined by this, इसके लिए हम क्या करेंगे, we'll first take this, we'll compute f and g at some point x, and then take the difference, and then take the modulus of the difference, thereby you'll actually be computing the distance। because आप देखिए जो f और g है ना, जब आप कहते हैं कि they are in this, so that means f is a function from x to r, it is continuous bounded। similarly g, चूंकि ये आ रहा है from CBXR, so g also is a function from x into r, so that means f values and g values they are both in r, और r में distance measure करने का mechanism है mod। so यहाँ basically आप measure कर रहे हैं the distance between these two values, मतलब actually these are the values of the functions f and g at this point x। और इसके बाद आपको क्या करना है, you have to take the supremum of all these distances as x values over x। By the way, this supremum will exist because of the completeness action। Why? Because जो आपका f और g है, they are bounded functions, so mod f minus g as x values over capital X, it will be a bounded set, it will be a bounded above set। मतलब ये जो set है ना, mod fx minus gx
as x varies over capital X, this is a bounded above set. This is bounded above. और अगर बाउंडेड अबो है ये तो इसका सुप्रीमम होगा. वही सुप्रीमम हम मान रहे हैं that it is sigma of f comma g. Sigma of f comma g is defined as that supremum which will exist by the completeness section. ये आप देख सकते हैं ये कैसे बाउंडेड है. अगर आप इसका कोई टिपिकल एलिमेंट लेते हैं वो इस फॉर्म का होगा fx minus gx, right? This is less than or equal to by triangle inequality mod fx plus mod gx. ठीक. Now f and g, they are both bounded functions, so mod fx will be less than or equal to some k1. इसी तरह से mod gx will be less than or equal to some k2. So this will be less than or equal to k1 plus k2. और अगर आप इसको k से डिनोट करेंगे तो आप कह रहे हैं कि this quantity is less than or equal to k, which is fixed. Basically आप कह रहे हैं कि every element of this set is less than or equal to k, so that means this is bounded above. Bounded above means supremum will exist, so that means this is a perfectly well defined quantity. तो आप यहाँ ये देख रहे हैं, it will exist and it will exist finitely. मतलब it will exist in R because this is bounded above. So supremum will exist in R. और यही सुप्रीमम हम ले रहे हैं as sigma of f comma g. आपको दिखाना है, then show that. ये है आपके लिए exercise. Then show that CBXR together with this sigma, this ordered pair, is a metric space. This pair basically. That means आपको दिखाना है sigma is a metric on this. That means it satisfies all the properties of for being a metric. ठीक है, ये आप करके आइएगा. बाकी अब इंशाल्लाह हम, क्योंकि ये आज तो किसी भी सूरत में नहीं होगा, it will take time. मतलब ये ना completion का जो मसला है, it will take time. मैंने अब अगर आपको याद होगा, मैंने पहले आपसे कहा था ना कि यहाँ एक प्रॉब्लम है. अगर आप पॉइंट्स लाना चाहते हैं तो लाएंगे कहाँ से? वो पॉइंट्स असल में हम यहाँ से लाएंगे, CBXR से ही हम लाएंगे वो पॉइंट्स. मैं आपको दिखाऊंगा CBXR, it contains XD. मतलब ये in a way आप देख सकते हैं कि that XD, this mathematically, लेकिन मतलब it will be in terms of a mapping. मैं आपको दिखाऊंगा in terms of a mapping that XD, metric space XD, it sits inside CBXR. ये हम कल देखेंगे सबसे पहले. But this metric space, it sits inside this metric space. So that means इसके बाहर एक दुनिया है और वहीं से हम वो पॉइंट्स बोरो करेंगे जिसकी मदद से फिर हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं. जिनकी मदद से, बिकॉज पॉसिबली वो एक से ज्यादा भी हो सकता है ना वो पॉइंट्स. इसे आप देख लीजिएगा. लेकिन ये ट्राई आप करेंगे, ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1 तो खुद ही मैंने आपको दिखाई थी, रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी. अब आपको बेसिकली अब ये करना है. और वैसे भी कुछ चीजें तो इसमें आसान है, जैसे ट्रायंगल इनइक्वालिटी, सॉरी मेट्रिक के लिए एक रिक्वायरमेंट है सिमेट्री. सिमेट्री इज एविडेंट. इफ यू कम्यूट f एंड g, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज यहाँ है ना मॉडुलस. mod fx minus gx is same as mod gx minus fx. So clearly sigma of f comma g is same as sigma of g comma f. So symmetry तो है इसमें. पॉजिटिव डेफिनेटनेस भी है इसमें, वो भी आप इजीली देख सकते हैं बिकॉज इफ दिस इज 0 इट मीन्स सुप्रीमम इज 0. सुप्रीमम इज 0 मीन्स, अब देखिए अगर इन क्वांटिटीज का सुप्रीमम 0 है तो मीन्स हर एक क्वांटिटी 0 होगी, मीन्स हर एक मॉडुलस 0 होगा. मॉडुलस 0 होने का मतलब है कि fx will be same as gx for every x in x. So that means f must be same as g. And if f is g तो ये 0 होगा. So sigma of f comma g is 0 if and only if f is equal to g. तो पॉजिटिव डेफिनेटनेस भी है इस सिग्मा में. बस आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी को दिखाना है और वो भी कोई डिफिकल्ट काम नहीं है. आपको बस मॉडुलस की ट्रायंगल इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करना है एंड यू विल गेट थिंग. आपको मिलेगा ये कि दैट दिस सिग्मा हैज ट्रायंगल इनइक्वालिटी आल्सो, सो देयरफॉर इट्स अ मेट्रिक ऑन CBXR. So therefore it's a metric space.
ठीक, ये करके आइएगा, बाकी इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। कल हम इसे कंप्लीट करेंगे ना, मतलब इस डिस्कशन को, और कल ही मैं आपको दिखाऊंगा कि हाउ यू कैन एक्चुअली कंप्लीट एंड अदरवाइज इनकम्प्लीट स्पेस। और इसमें भी एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसीजर है, जैसे कल वो बाना कंट्रैक्शन प्रिंसिपल थ्योरम का जो प्रूफ था ना, उसमें ना जो उस प्रूफ में एक कंस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म है, मतलब आपको एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसीजर दिया गया है जिससे आप वो फिक्स्ड पॉइंट क्रिएट रादर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जो यूनिक फिक्स्ड पॉइंट होता है वहाँ कंट्रैक्शंस का। यहाँ भी आपको एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसीजर मिलेगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन एक्चुअली डू दिस completion of an otherwise complete space. So it will be completion of a metric space में इसमें ना अब थोड़ी सी एडिटिंग कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा नहीं हुआ ना आज, so it will be part 1, इसे हम इंशाल्लाह बाकी कल देखेंगे। कोई क्वेश्चन अगर आज के लेक्चर के जो अभी तक हमने देखा आज, इसके रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर हाँ सर जब आप ये कंप्लीटनेस जब खत्म करेंगे हाँ तो थोड़ा बहुत ये जो हमने ऑसिलेशन फंक्शंस पढ़ा था हाँ, थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा। हमें एक्चुअली उसके लिए तो आप दो चीजें कर सकते हैं। आप YouTube पर मेरे उस पर ना कुछ वीडियोस अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। अच्छा आप ये भी कर सकते हैं, मुझे ओके सर परसों 5th सेमेस्टर वालों को ना वही चीज फिर से पढ़ानी है। अगर वो ओके स्किप सर हुई है आपको तो आप वो क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। यस सर एक्चुअली वो स्किप हुई थी वो क्लास मुझे पहली, फिर आपने उस पे 2 और लेक्चर दिए थे ऑसिलेशंस पे ही, तो फिर थोड़ा मैं कंफ्यूज उस हो पर गई उसमें। YouTube पर मेरा एक वीडियो भी है, आप वो भी देख सकते हैं। अगर ओके सर आप चाहे तो क्लास में भी आप ना 5th ओके सेमेस्टर सर में। मैं यूट्यूब भी कंसल्ट करूँगी। चलिए ठीक, ओके सर ओके। और अगर कोई किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए फिर ठीक है, आप